मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। सप्तमी विभक्तेः अधिकरणकारकस्य अभ्यासः अस्माभिः क्रियते। तत्र आधारो अधिकरणं सप्तम्यधिकरणे इत्यादिकानि सूत्राणि अस्माभिः साधितानि पठितानि। प्रकृतं विषयम् अस्ति सतिसप्तमी। सतिसप्तमी विषये केचन नियमाः अस्माभिः अधीताः। तत्र मुख्यं सूत्रं वर्तते यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? यस्य क्रियया एकया क्रियया क्रियान्तरं यदि लक्ष्यते ततः सप्तमी विभक्ति कर्तव्या भवति। एका क्रिया क्रियमाणा वर्तते, ततः अपरां क्रियां प्रदर्शयितुं सतिसप्तमी इति, सतिसप्तम्याः अथवा सत्सप्तमी अथवा भावसप्तमी इति तत्र नामानि वर्तन्ते। अस्य उपयोगः भवति, अस्य प्रयोगस्य उपयोगः भवति। उदाहरणं दत्तमस्ति गोषु दुह्यमानासु गतः। He went when goats were being milked. So that's how we can take a sentence. जब गायों का दोहन हो रहा था उस समय वो व्यक्ति गया। And दुग्धासु सह आगतः. Now here दुह्यमान is present continuous tense, shatru pratyaya they have used. And dugdha or dugdhasu agatah, dugdha is kta pratyayanta rupam, it is bhutakal, past tense. When cows were milked, then he returned. The cows being milked, he went away and he returned when cows were milked. So this how this sentence we need to understand. दुह्यमानासु गतः दुग्धासु आगतः एतावता अस्माभिः अधीतम्। अत्र यदि सन्देहः संशयः किमपि प्रष्टव्यम् अस्ति सतिसप्तमी विषये पृच्छन्तु, नो चेत् अहम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामि। अस्ति वा किमपि प्रष्टव्यम् अस्ति वा? यदि संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। न प्रष्टव्यम्। अग्रे अस्मिन्नेव सूत्रे अधुना यस्य च भावेन भावलक्षणम् अस्य अर्थः पठितः। यस्य क्रियया क्रियान्तरं यदि लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। गोषु दुह्यमानासु गतः इदं वाक्यम् अस्माभिः पठितम्, उदाहरणं ज्ञातं। ततः अस्मिन्नेव सूत्रे एकं वार्तिकं पठ्यते। वार्तिकम् अस्ति अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद् वैपरीत्ये च। नाम कश्चन अर्हः समर्थः यदि व्यक्तिः अस्ति तस्य किमपि कर्तृत्वं दर्शनीयम् अस्ति चेत् तत् कर्तृत्वे दर्शनीये कर्तृत्वे सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते। तथैव अनर्हानां, वन हू इज नॉट केपेबल टू डू समथिंग, टू शो हिज अनकेपेबिलिटी, वी नीड टू यूज सप्तमी विभक्ति। एंड तद् वैपरीत्य मीन्स व्हाट? इवन दो ही इज केपेबल but his akartrutva pradarshana, that is called tadviparitata. Even though anarhaha means incapable person is not able to do but he still does something, that is called tadvaiparitya. So both sentence, there would be 4 sentences. I will break down this vartika into 4. Okay, so let's see example of each. Arhanam kartrutve. Arha naam samartha, one who is capable. To show his capability, there is a udharanam. Satsu taratsu asantah asate. Now we need to understand these words first. Sat means sajjana person, a sadhu purushaha. Tasya
तेषु तरत्सु, तेषु सज्जनेषु तरत्सु असन्तः आसते। असंत, those who are not saintly people or those who are incapable, asajjan people, those they just asate means वो रह जाते हैं, they be here। सज्जनों के तरते हुए असज्जन रह जाते हैं। सज्जन लोग इस संसार सागर को क्रॉस करके चले जाएंगे, लेकिन असज्जन लोग जो है, अनकेपेबल लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसमें मेनली क्या दिखाना चाहते हैं, जहां समर्थ व्यक्ति की कर्तृत्वता दिखानी है वहां सप्ती सप्तमी यूज करेंगे। तो यहाँ सत शब्द था, उसमें सप्तमी कर दी सत्सु। तरत्सु ऐसा वाला आगे यूज कर दिया, सत्सु तरत्सु असंतः आसते, तो यहाँ सप्तमी का प्रयोग किया। ये वाला समझ में आ गया होगा तो अगला वाला आ जाएगा। अगला वाला क्या है, अनर्हाणाम अकर्तृत्वे। यहाँ समर्थ व्यक्तियों का कर्तृत्व बताया। आगे जाकर के जो अनर्ह लोग है, अनकेपेबल वाले जो लोग हैं, उनका अकर्तृत्व बताते हैं। उदाहरण थोड़ा सिमिलर ही देखो, असत्सु तिष्ठत्सु संतः तरंती। वाक्य का थोड़ा उन्होंने ऑर्डर चेंज की, मीनिंग वैसा का वैसा है। देखो मतलब यहाँ मेन फोकस हमारा किसके ऊपर है, असज्जन लोगों के ऊपर है। असज्जन लोग जो है, असाधु लोग जो है, उनके यहाँ रहते हुए सज्जन लोग तर जाते हैं। मेन आपका फोकस कहाँ है, आपको क्या दिखाना चाहते हो आप? सज्जनों का तरना आप दिखाना चाहते हो या असज्जन लोगों का यहाँ रहना दिखाना चाहते हो? तो जिनके ऊपर फोकस करते हो उनकी सप्तमी कर देंगे। सत्सु तरत्सु सज्जनों का तरना, अर्हाणाम कर्तृत्वे, अनर्हाणाम अकर्तृत्वे, असत्सु तिष्ठत्सु, तिष्ठत्सु मतलब असज्जनों के यहाँ रहते हुए सज्जन लोग इस संसार सागर से तर जाते हैं। यहाँ टाइपो है। ठीक है। अभी तद वैपरीत्य मतलब क्या? अभी इन जो पहला वाला सेंटेंस उन्होंने बोला अर्हाणाम कर्तृत्वे, उसका ही वो क्या कर देंगे, अर्हाणाम शब्द सेम यूज करेंगे लेकिन उनका अकर्तृत्व दिखाएंगे। तो देखो अभी तद वैपरीत्यम नाम अर्हाणाम अकर्तृत्वे, जो समर्थ लोग हैं उनका भी अनकेपेबिलिटी दिखाना। जैसे कि सत्सु तिष्ठत्सु असंतः तरंती, संत लोग यही रह जाते हैं और बाकी के लोग तर जाते हैं। वैपरीत्य दिखाना है, उसका कुछ मीनिंगफुल कुछ अर्थ बताना है या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे सेंटेंस उन्होंने रखे हैं यहाँ उदाहरण के तौर पर। अर्हाणाम अकर्तृत्व, सज्जनों के रहते हुए असज्जन तर जाते हैं। तो इस उदाहरण को हम पॉजिटिव वे ऐसा ले सकते हैं, सज्जन यहाँ रहते हैं इसलिए असज्जन भी तर जाते हैं, ऐसा अर्थ कर पाएंगे। अर्हाणाम, वस्तुतः इस फ्रेज को देखेंगे तो ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। अर्हाणाम अकर्तृत्व दिखाना है, मतलब सज्जन लोग तो तरते नहीं लेकिन बाकी के तर जाते हैं, ऐसा अर्थ यहाँ दिख रहा है। तो वाक्य को कैसा इंटरप्रेट करना है उसके लिए हमें ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए कि उन्होंने अकर्तृत्व किनका बता रहे हो, अर्ह व्यक्ति का, समर्थ व्यक्ति का अकर्तृत्व दिखाना है। चाहे वो सज्जन हो, उनका भी अकर्तृत्व यदि दिखाना है तो वाक्य बनाने के लिए तो हमें कुछ परेशानी नहीं, वाक्य तो बना सकते हैं। सज्जन लोगों के रहते हुए बाकी लोग तर जाते हैं। और दूसरा वाक्य क्या था, अनर्हाणाम अकर्तृत्वे था, यहाँ अ निकाल देंगे अभी। अनर्हाणाम कर्तृत्व, यद्यपि वो समर्थ नहीं है लेकिन उसका कर्तृत्व यदि हम फोकस में लाना चाहते हैं, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ऐसा वाला सेंटेंस बना सकते हैं। असत्सु तरत्सु संतः तिष्ठन्ति, साधवः तिष्ठन्ति, सज्जन लोग रह जाते हैं। मतलब क्या, यद्यपि वो असज्जन है लेकिन वो तर जाएगा, उसका कर्तृत्व यहाँ हम हाईलाइट करना चाहते हैं। असज्जन लोग भी तर जाते हैं, उनके तर जाते हुए
संत लोग रह जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रयोग यहाँ दिए हैं, तो इस वार्तिक को इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन है, यदि याद रहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अपनी सती सप्तमी याद रखो, वो बहुत है। ठीक है, अगला अविनाश जी, तद वैपरीत्यम मीन्स व्हाट? तद वैपरीत्यम, now whatever we had highlighted, like अर्हाणाम कर्तृत्वम, दोज हु आर केपेबल, अभी उनका विपरीतता दिखानी है, उनका अकर्तृत्वता दिखानी। एक फ्रेज में हम कर्तृत्व दिखा सकते हैं, वो हाईलाइट करना है। तो दूसरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, अर्हाणाम जो समर्थ व्यक्ति है उनका अकर्तृत्व दिखाना, विभिन्नता दिखाना, एक में कर्तृत्व दिखा सकते हैं, एक में अकर्तृत्व दिखा सकते हैं। वैसे ही अनर्ह लोग अनकेपेबल ही होते हैं, हाँ, ये वाला सामान्य वाक्य रहेगा। लेकिन अर्ह व्यक्ति का भी कर्तृत्व दिखा सकते हैं, वो हो गई विपरीतता। वैपरीत्यम नाम विपरीतता, विपरीत भाव, हाँ, दूसरा वाला भाव, ऑपोजिट, हाँ, इमोशन एक्सेट्रा। Sorry, you cut off little bit. लास्ट वाला मैंने बोला कि अलग वाला भाव दिखाना, विपरीत वाला भाव दिखाना, और भिन्नता दिखाना। भिन्नता क्या, इंग्लिश वाला अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रह सकता है उसके लिए, विपरीतता के लिए? Not extreme. I don't think it was extreme, but ना एक्सट्रीम it is. दोनों वाक्यों में हमें भेद दिखाना, मतलब I will search for that word, then I will let you know. You can also find if you get. हिंदी में जी, हिंदी में बोलिए जी। Your voice is not audible. नहीं, हिंदी में बोलिए उसको। अलग अलग दिखाना, जैसे कि एक वाक्य में कर्तृत्वता दिखानी है, दूसरे वाक्य में अकर्तृत्वता दिखानी है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, विपरीतता मतलब डिफरेंशिएशन, ऐसा वाला ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएशन दिखाना, विपरीतता दिखाना। ठीक है, षष्ठी च अनादरे सूत्रार्थः द्रष्टव्यः, पुनः सति सप्तमी एव कंटिन्यू भवति, किंतु किंचित अधिकता तत्र दर्शयन्ति आचार्याः। अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, नाम किं, भावलक्षणे सति सप्तमी भवति, भाव सप्तमी इति अस्माभिः पठिता। एकया क्रियया क्रियान्तरं यदि दर्शति तत्र भाव सप्तमी, सति सप्तमी, सत् सप्तमी उच्यते। अत्र भावलक्षणे, लेकिन अनादर अधिक्ये, वेन अनादर वाचक अथवा डिसरिगार्ड, इफ यू वांट टू शो रिगार्डिंग समथिंग, तत्र षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति उभययोः प्रयोगः भवति इति अर्थः। उदाहरणं किम्, उदाहरणेन सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः भविष्यति। रुदति सः पुत्रं रुदति प्राव्राजित्, संन्यासं स्वीकृतवान् इति अर्थः। सः संन्यस्तवान् इति अर्थः। कदा? पुत्रं रुदति, पुत्रादिकं रुदति, पुत्रं भवेद्वा भार्या भवेद्वा, यद्यपि ते रुदन्तः आसन् तथापि अयं प्राव्राजित्, नाम किं कृतवान् अयं तेषां रुदनादिकस्य अपि तिरस्कारं कृत्वा सः संन्यस्तवान् इति अर्थः। He disregarded their crying etc. and he just took a sannyasa. अत्र टाइपो आसीत्। अस्तु, वाक्यम् एवं वर्तते, रुदतः रुदति वा प्राव्राजित् means what? In spite of her weeping or their weeping,
he went away, he took sannyas. That way we can interpret this one. So here little bit another is shown about her, his wife or his putra, etc. Okay, so this was only one example they give. Now let's move to simple sutra now. Very simple. स्वामीश्वराधिपतिदाया साक्षि प्रतिभू प्रसूतैश्च. Whenever we use this kind of word, which kind of word? Swami, Ishwarah, Adhipatiः, Dayadah, Sakshi, Pratibhuः, Prasutah. एतैः सप्तभिः शब्दैः योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः. षष्ठी अपि भवति, सप्तमी अपि भवति. उदाहरणं किम्? उदाहरणेन ज्ञायते. पश्यन्तु. गवां स्वामी. स्वामी नाम मास्टर्. गवाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति. केषां स्वामी इति प्रश्नश्चेत् साधारणं वाक्यं तत्र सम्बन्धं दर्शयितुं षष्ठीविभक्ति प्रयुज्यते. तत्तु सरलं. किन्तु सप्तमी अपि भवति इति अनेन सूत्रेण ज्ञायते. चकारग्रहणेन तत्र षष्ठी सप्तम्यौ च स्तः इति अर्थः स्वीकर्तव्यः. नाम सम्बन्धं दर्शयितुं षष्ठीविभक्ति सामान्या, किन्तु सप्तमी अपि भवति. गोषु स्वामी अथवा गोषु ईश्वरः, गोषु अधिपति इति सर्वत्र ज्ञातव्यं. गवां स्वामी, गवाम ईश्वरः, गवाम अधिपतिः, अर्थः समानः. ही इज अ मास्टर ऑफ काउस. गवाम इति षष्ठी. गोषु ईश्वरः, गोषु स्वामी, गोषु अधिपतिः. मीनिंग इज सेम. ओके, इवन वी कैन यूज षष्ठी और सप्तमी. सो स्वामी, ईश्वरः, अधिपतिः, 3 words we have covered. Okay, then thereafter dayadah. Then there are some other words. Let's see. दायादह means what? One, हिस्सेदार को दायादह बोलते हैं. हिस्सेदार को यहाँ वाला शब्द दिया है here. साक्षिण शब्द आपको पता ही है, विटनेस, वन हु इज विटनेस. प्रतिभू means surety, and prasutah means begotten. Is it correct pronunciation? How to pronounce this word? प्रसूतः के लिए I need to check. Begotten, right? Begotten. Okay. Another. गवाम दायादः अथवा गोषु दायादः. Now he is a दायादः, हिस्सेदार of cows. He is a shearer of cows. How to pronounce this one? I think it is air. Air bolte, air. The virus. I don't know if H is silent there or not. I think it is air. Air bolte, हाँ. अच्छा, air. Air. He is a air. He is an heir of cows. ओके, ऐसा ही होगा ना. मैंने इसलिए इंग्लिश में लिखा नहीं कुछ. ओके, जो भी है, अर्थ समझना है कि ये जो अपने पैतृक संपत्ति होती है, पिता से मिलने वाली जो संपत्ति, उसका वो दायाद है, हिस्सेदार है. उसको भी कुछ गाय अपने मतलब उनको भी कुछ गाय दिए जाएंगी. जैसे कि 2 यदि पुत्र है एक पिता के, तो एक पुत्र को कुछ हिस्सा मिलेगा, दूसरे पुत्र को कुछ हिस्सा मिलेगा. तो ही इज अ दायादः. गवाम दायादः, गोषु दायादः. सप्तमी अपि उपयुज्यते, षष्ठी अपि उपयुज्यते. साक्षी, साक्षी नाम विटनेस अथवा प्रतिभूः. प्रतिभूः नाम वन हु इज अधिकारी टू गेट द्रव्य एक्सेट्रा. गवाम प्रतिभूः मतलब गायों के बदले में कुछ द्रव्य प्राप्त करने वाला. प्रतिभूः मतलब द्रव्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति.
लेकिन बदले में he will give cows, then he is going to get some money. That person is called pratibhuhu. Sakshi means witness. Gavam sakshi, goshu sakshi. So all words we have used. So now he is षष्ठ्याम एव प्राप्तायाम पाक्षिक सप्तम्यर्थम वचनम. Now what is the meaning of this sentence? He is saying, Vrittikar is saying that षष्ठ्याम एव प्राप्तायाम, only षष्ठी was prapta to show relationship. But pakshika means vikalpena saptami artham api vachanam, saptami api vaktavya, saptami api bhavitum arhati iti artha. Only shashti was prapta to show relationship, but सप्तमी अपि भविष्यति इति अनेन सूत्रेण ज्ञायते इति अर्थः. उदाहरणं समानमेव. गवां गोषु वा स्वामी, गवां गोषु वा प्रसूतः, गाम् एव अनुभवितुं जातः. प्रसूतः इत्यस्य उदाहरणं न अत्र न स्थापितं, यतोहि अत्र प्रदत्तं वर्तते. अर्थः गवां गोषु वा प्रसूतः. प्रसूतः नाम किं? गाः एव अनुभवितुं जातः. One who is born to experience the cow or to serve a cow. Prasuta. Gavam prasutah, goshu va prasutah. Okay. Another. We'll practice little bit. You can make sentences by using Shashti, Saptami. Swami, a master. Ishwarah, the Lord. Adhipatihi, the ruler. Now, along with these words, we have to use Shashti and Saptami. So make few simple sentences. Unmute yourself. गृहस्य स्वामी, गृहे स्वामी. और बहुत सारे हम जिन जिन के स्वामी हैं, जिन जिन के मास्टर हैं, मास्टर इन द सेंस मालिक जिनके हैं, वो बोल सकते हैं, है ना. Can we say सर्वस्य ईश्वरः? सर्वस्य ईश्वरः, सर्वेषु ईश्वरः. आम्. सर्वेषु ईश्वरः. हाँ, सप्तमी अपि भवति खलु. सर्वस्य ईश्वरः इति षष्ठी. सर्वेषाम् ईश्वरः इति एकवचनं भवत्या युक्तं. तो सर्वस्य ईश्वरः अथवा सर्वे सर्वस्मिन् ईश्वरः एकवचनस्य प्रयोगं कृत्वा षष्ठी अपि सप्तमी अपि कर्तुं शक्या. सर्वस्मिन् is the saptami. सप्तमी. We can also say bahuvachanam sarveshu ishvarah. सर्वेषु ईश्वरः. सर्वेषाम् ईश्वरः, सर्वेषु ईश्वरः. सीतायाः स्वामी रामः. सीतायां स्वामी रामः तथापि कर्तुं शक्यते. अधिपति, अधिपति नाम कस्यचित् नगरस्य अथवा नगर्याः यः अधिपति भवति, राज्यस्य यः अधिपति भवति. अयोध्यायाः अधिपतिः दशरथः, अयोध्यायाम् अधिपतिः दशरथः. मथुरायां. In like according to Ramraksha Stotra, there is a sloka Swami Ramo Mat Pita Ramachandraha. So Ramo. हाँ, राम. Swami shabda, along with Swami shabda we can use a particular name, right? Who is Swami? Rama is Swami. Who's Swami? Ramah mama Swami, mai Swami. So both way we can say. Swami Ramah. Then Mat Pita. So they have just did Samastapadam they have used. Particularly Shashti or Saptami in that shloka they haven't used. So we can add, when there is no vibhakti use, we can add mama Ramah Swami, mama Swami Ramah, athva Saptami kurmaschet mai Swami Ramah. Both way we can use.
नेक्स्ट लङ्कायाम् अधिपति रावणः लङ्कायाम् अधिपतिः रावणः अथवा लङ्कायाः अधिपतिः रावणः। रावणः अधिपतिः पतिः पतिः also means one who protects, so pati shabd also can be used, but they have used swami. अयोध्यायां दायाद कुशः ऐसे उच्चतम और पुनः नो अयोध्यायां ऐसे बोल सकते हैं या किसी फैमिली का ही बोलना है। हाँ हाँ बोल सकते हैं। रघुवंश नहीं, परंतु रघुवंशस्य दायाद कुशः रघुवंशस्य दायादः कुशः समीचीनम्। और रघुवंशे दायादः दायाद अंशः किं कुशः कुशः नवः कुशः उभावपि दायादौ इति अर्थः समीचीनम्। अस्तु अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमम् अपि सरलमेव। आयुक्तकुशलाभ्यां च असेवायाम् आयुक्तः शब्दः आयुक्तः नाम संलग्नः कुशलः शब्दः कुशल मीन्स् निपुणः एतेषां शब्दानाम् उपयोगः यदा भवति तदा सप्तमी अपि भवति षष्ठी अपि भवति। आभ्यां योगे आभ्यां नाम आयुक्तकुशलाभ्याम् एताभ्यां शब्दाभ्यां योगे षष्ठी भवति सप्तमी च भवति इति अर्थः। षष्ठी सप्तम्यौ स्तः कदा तात्पर्ये अर्थे द्योत्ते सति नाम यदा तात्पर्यं नाम संलग्नता यदा दर्शनीयं भवति तदा when we want to show tatparata engagement that time we need to use shashti also saptami also. For example आयुक्तः कुशलः वा हरिपूजने हरिपूजनस्य. So now this sentence if you want to break we will break into two, like हरिपूजनस्य आयुक्तः हरिपूजनस्य कुशलः षष्ठीकृता अथवा हरिपूजने आयुक्तः आयुक्तः व्यापारितः अत्र व्यापार शब्दः प्रयुक्तः खलु तात्पर्य शब्दः प्रयुक्तः खलु तस्य संलग्नः engaged इति अर्थः भवति. he is engaged in haripuja haripujanam, he is skillful in haripujanam. So it looks like saptami is most appropriate, but also they use shashti also. He is skillful of haripuja, he is skillful of or he is engaged in haripuja. While translating or making sentence in English we use preposition in. He is engaged in haripujanam और षष्ठी भी इसके साथ कर सकते हैं. उनका अभिप्राय ऐसा है. वाक्य इंग्लिश में वाक्य तो इन करके ही यूज करेंगे. और कुछ हो सकता है क्या? आयुक्तः हरिपूजने आयुक्तः हरिपूजनस्य. ठीक है, इनके उदाहरण देखते हैं. आयुक्तः कुशलः वा कटकरणे अथवा कटकरणस्य. कट मीन्स मैट, कटकरणम मीन्स मेकिंग मैट. ही इज आयुक्तः डीपली एब्जॉर्ब्ड इन मेकिंग मैट और मैट मेकिंग. आयुक्तः he is skillful of mat making अथवा in mat making. So here we can use both. He is skillful of mat making or in mat making. Both way we can take. Okay, now there are some dalakrityam is given. आसेवायां किम अत्र उच्यते आयुक्त कुशलाभ्यां च आसेवायां.
So asevayam means what? He is deeply absorbed. When this kind of aseva we want to say, we want to show, that time only we can use Shashti Vibhakti. So when that asevayam, kshamyatam, asevayam नाम deeply absorbedness we want to show, that time Shashti also, Saptami also we need to use. If in this sutra they do not put asevayam padam, they just say ayukta kushalabhyam cha Shashti Saptamyau stah. Only that much if they keep, then what will happen? Then if deeply observed this kind of use they don't want to do, that time we cannot use Shashti Vibhakti. Only we can make Saptami Vibhakti. So like for example, they give Ayuktaha Gau Shakate. So Gauhu means cow or ox, whatever we can take. The cow is slightly yoked to the cart. Here cow should not be translated. Mostly cow is not yoked with cart, right? So ox word we can use. Bull. The bull is slightly yoked to the cart. That way we can take. Ishad means what? Ishad yuktah. Slightly. Actually cow is also fine because main work is bull is doing, and she is slightly added to that cart. Okay. So is this clear? कितना वाला अर्थ मेन होता है हमारा सूत्र का, तो उसको यहाँ थोड़ा एलेबरेट किया. तो इसमें से कुछ वाक्य यदि क्लियर नहीं है तो हम उसके बारे में और विचार कर सकते हैं. गौहु इति प्रथमा विभक्ति. हाँ, गौहु मीन्स आइदर वी कैन टेक बुल और वी कैन टेक काउ हियर. गौ शब्देन धेनुः अथवा वृषभः अत्र स्थापयितुं शक्यते. इदं स्पष्टं वा? अग्रे सरामि वा? यतश्च निर्धारणम् इति वर्तते. That word, a particular word if we are using, which shows specification, good qualities, etc. That time we need to use again Saptami or Shashti. Jati, Guna, Kriya, Saujnabhihi, Samudaya Ekadeshasya Prathakkaranam. Samudayat Ekadeshasya Prathakkaranam. If we are separating a person from Samudaya, from group, by showing Jati, Guna, Kriya and Saujna, that time we can use both cases, Shashti and Saptami also. For example, जाति इत्यस्य उदाहरणं, जातेः उदाहरणम् अस्ति नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः अथवा नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः. बोथ वे वी कैन से, आइदर वी कैन यूज षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति. कः श्रेष्ठः वर्तते? जातिषु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रः. एतेषु श्रेष्ठः कः? उच्यते ब्राह्मणः श्रेष्ठः. Among men or among jati, Brahmana is Shrestha. Among men we can say actually men nrunam athva nrushu iti padam upayuktam. So among men Brahmana is great or superior. That way we can make. श्रेष्ठ मीन्स ग्रेट और सुपीरियर. ऐसे वाले शब्द यूज किए मैंने, पता नहीं अप्रोप्रिएट है कि नहीं. श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए ग्रेट शब्द ठीक है और दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं, ग्रेट या सुपीरियर. इसके अलावा या ये भी ठीक है. ये ठीक है. ठीक है ना. ब्राह्मण इज सुपीरियर. सुपीरियर वर्ड looks like it is like being compared with others, right? So we can say among men Brahman is superior. Okay. First jati guna विषये किंचित दर्श्यते. गवाम
कृष्णा या गो वर्तते, गौ वर्तते, कृष्णा धेनु वर्तते, काउ वर्तते, सा बहुक्षीराः, कृष्णाः बहुक्षीराः. तो among all kind of cows, a black one gives much milk. बहुक्षीराः बहुवचनं प्रयुक्तं चेत् we can say कृष्णाः बहुक्षीराः. Black cows gives much milk. Among all varieties of cows, black cows gives much milk. Give, not we should use. Let me change the sentence. The among cows, the black. The also we cannot use. Black cows give much milk, right? Okay. Now it looks. Among cows, black cows give much milk. Okay, so this was guna. तथैव क्रिया, क्रियासु अपि बहूनि उदाहरणानि उपलभ्यन्ते. मनुष्याणां मनुष्येषु वा क्षत्रियः शूरतमः, he is a पराक्रमी, शूरतमः. सो मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः, मनुष्येषु क्षत्रियः शूरतमः इति उदाहरणं तत्र दातुं शक्यते. ओके, सो नाउ अप टु दिस. Can we say Pandavanam Arjunah Sarushotamah? धनुर्धरः अथवा धनुर्विद्यायाम् अर्जुनः श्रेष्ठः, धनुर्विद्यासु अथवा धनुर्विद्यायाः अर्जुनः श्रेष्ठः, धनुर्विद्यायाम् अर्जुनः श्रेष्ठः. That way we can put. अथवा पांडवेषु युधिष्ठिरः वा भवतु अथवा अर्जुनः वा भवतु. We can say पांडवेषु युधिष्ठिरः सत्यप्रियः अथवा धर्मराजः धर्मवीरः. That kind of sentence we can to show some quality of person. We need to use saptami or shashti. That's all. Again, रघुवंशीय राज्ञां रामः अति प्रसिद्धः. That way also we can put. Also, again you can make few sentences. Now we have 1 minute. We will stop here. You can make sentences. अच्छा, we didn't complete ना this. जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य एकव्यक्तेः यदि पृथक्करणं भवति, एकदेशस्य पृथक्करणं भवति, तदा निर्धारणं यतः निर्धारणं नाम यस्मात् पृथक्करणं भवति ततः षष्ठी अपि भवति, सप्तमी अपि भवति इति सरलः अर्थः. उदाहरणं प्रदीयते. नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा. अत्र सिंगुलर दत्तं मया उदाहरणेषु विसर्गः स्थापितः. विसर्गः यदि नास्ति चेत् पूर्वं वाक्यमपि साधु एव आसीत्. गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः, नाम अत्र क्रियायाः उदाहरणम् अत्र प्रदत्तं. गच्छतां नाम दोज हु आर गोइंग, अमॉन्ग देम धावन शीघ्रः गच्छति. वन हु रन्स ही गोज शीघ्रम, शीघ्रम के लिए फास्ट. छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः. अत्र मैत्रः कीदृशः? संज्ञया ज्ञायते. पटुः वर्तते. ही इज अ क्लेवर बॉय, ही इज अ चंचलः चपलः पटुः